Hello student, I am Varun Nishad from LPM Public School. In this video, we are discussing about some topics, that is chemical formula. Chemical formula. The chemical formula is that, suppose you have told to that baking soda. Baking soda. The name of baking soda is chemically, it is a common name of substance. The chemical name that we know in our chemistry subject, that is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. So sodium bicarbonate is that, or sodium hydrogen carbonate. How it write it as sodium hydrogen carbonate. Hydrogen carbonate. So it is right that NaHCO3. It is sodium hydrogen carbonate. Another that is blue vitriol. Blue vitriol. Blue vitriol. That is name is copper sulfate. Copper sulfate. Copper sulfate, that is CuSO4. It is a salt. So in this way we can learn the different chemical formula have been given in the chemistry, which we can familiar from them after practice. Another topic, that is isotone. That is isotone. Isotone. Isotone are those elements. Isotone are those elements. Isotone are those elements which have same number of neutron. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कार्बन 614, नाइट्रोजन 715 and oxygen OH 16. How many neutrons are there in this element? That is neutron. Neutron is 8. Here is also neutron, that is 8. Here is also neutron, that is 8. If you add to calculate their atomic mass, that is 14, 15, 16, how the number of protons, that is number of proton, that is totally exactly equal to the electron. We are already discussed about this information, that is number of proton, number of electron and number of neutron. We know that already about that. The variations in the elements, variation in the isotopes, variation in the isobars are due to the variation in the number of neutrons which are present in the nucleus. So there is no variations in the proton and electron number. So number of proton, that is 6. Number of proton, that is 7. Number of proton, that is 8. अगर आप ये काउंट करते हो, अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये 14 के बराबर होगी. 8 + 6 = 14.
और ये अगर आप काउंट करते हो तो किसके बराबर होगी वो, ये आपके 15 के इक्वल होगी। अगर यहाँ पे आप पिक करते हो तो ये किसके इक्वल होगी, ये 16 की। 8 और 8 16, 8 and 8 are 16। So यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन are those sorry for that dear student। So जो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो इक्वल्स हैं, दीज आर द इक्वल, दैट इज 8 8 8, बट इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं, बट इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। So these are carbon, nitrogen and oxygen are isotone to each other। So isotone are those elements which isotones are those elements which have same number of neutron। So another point, that is empirical formula। empirical formula, empirical formula को हम बोल सकते हैं, यहां ब्रैकेट में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट फॉर्म ऑफ empirical formula? सपोज अगर आप एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। What will be the example? What will be the that is C6H12O6? Suppose that अगर आप CH2O लिखते हैं, CH2O, तो यहाँ पे अगर आप उसमें नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ C6 करते हैं और यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 C6 and 2 into 2 into 6 and O6, तो कितने हो जाएंगे C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 का, ये फार्मूला है जिसका CH2। और अगर आप नेक्स्ट क्लासेस में अगर सीखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट इसका जो कॉमन फार्मूला होता है, इसका जो कॉमन फार्मूला होता है CH2O, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। Why? If you exist any number of for those elements, it become the change simultaneously, so it is a short form। Suppose if you came in the alkane, अगर आप क्लास 10 की केमिस्ट्री की बात करें और कार्बन कंपाउंड की बात करें, एल्केन की बात करते हैं, एल्केन the common formula or short form of alkane or empirical formula of alkane, that is CnH2n plus 2। अगर आप नंबर लिखते हैं n is equal to 2 लिखते हैं, तो n is equal to 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर n is equal to 1 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, n is equal to 1, तो n is equal to 1 लिखेंगे तो हो जाएगा C1H2 into 1 plus 2, तो CH4, it will be equal to CH4। But in case of that alkene, अगर आप यहाँ पे n is equal to number 6 नंबर लिखते हैं, n is equal to number 6, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, H2 into 6 plus 2। So how many what will be the situations of that? तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएंगे, C6H12 plus 2H14, ये C6H14 इसका नाम है हेक्स
हेक्सेन नाम है इसका, नेम इज हेक्सेन, हेक्सेन। अब हेक्सेन इसका नाम क्यों है? क्योंकि एन जो सफिक्स है, दिस सफिक्स इज टोटली रिलेटेड टू दैट ऑफ सफिक्स, दैट इज अगर बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं, आप प्रत्यय उपसर्ग बोलते हैं, लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं एन और एन, ये मैच कर रहा है। और हेक्स जो है इज फॉर 6 नंबर ऑफ कार्बन, तो ये 6 नंबर कार्बन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेक्स को। एंड यहाँ पे जो एन जो रिलेट कर रहा है एल्केन, दैट इज एल्केन का जो लास्ट वर्ड है, सफिक्स वर्ड है एन, दैट इज एन, व्हिच इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम दिस एल्केन। सो एल्केन का एम्पिरिकल फार्मूला होगा CnSUn+2। So this is about the empirical formula and isotopes, and another topic we will discuss in the next video. Thank you. One more thing is that, sorry for that. One more thing is that discovery of neutron, discovery of neutron, that is in 1932 by James Chadwick, which influence, इसका influence क्या होता है, इसका importance क्या होता है? Influence in atomic mass, influence in atomic mass, their variations, the variations of neutrons, variations of neutron, that is it cause isotope, isobar and isotone, isobar, isotones. Okay, so next one is that so this is an important information about the neutron, and it found in nucleus of an atom, nucleus of an atom, and it neutral towards charge, neutral towards charge. Another, that is proton. The charge on proton, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, but it is mass of, definitely mass is given by the Ernest Rutherford, but their mass will be equal to the 185 mass of hydrogen. In the normal hydrogen, not about isotopes of hydrogen, in the normal hydrogen there is a atomic mass that is 1h1, one atomic mass and atomic number of 1h1. So number of proton, that is number of proton is 1. And that's why the mass of proton is equal to 1 unified mass of hydrogen. But mass
mass, if we compare the mass of electron, electron is equal to 1/1840 unified mass of hydrogen. Mass of hydrogen. So means that hydrogen is 1/1840 heavier than electron, or electron is lighter than hydrogen, lighter 1/1840 unified mass of hydrogen. Means that proton is 1/1840 heavier than 1/1840 heavier than electron. This is very important comparison between, means mass of electron is equal to 1/1840 unified mass of hydrogen. That's why again proton is, because mass of proton is equal to hydrogen, the rest of proton is 1/1840 heavier than electron. The another information we will discuss later.